Well, I am holding in my hands tonight a letter unlike any I have ever read, a letter that I could never have imagined being written by anyone working in the United States Senate to anyone else working in the United States Senate. And we just got this, just got a copy of this. And so I am departing from what were my prepared remarks at this moment to insert this into the show. And the reason this letter exists and is such a shock to me based on my own experience of working in the Senate is that no one like Mike Lee was working in the United States Senate when I worked there. And Mike Lee disgraced himself this weekend and through guilt by association disgraced every member of his Senate staff with conduct the Senate has never seen before. The Senate has a phrase, point of personal privilege. It is the phrase a senator uses sometimes to ask to speak out of turn in order to say something of the utmost importance to that senator personally. And I want to give that privilege right here, right now, to Ed Shelleby, who is the Deputy Chief of Staff to Minnesota Senator Tina Smith. Ed Shelleby wrote this letter to the staff of Utah's Republican Senator Mike Lee after Mike Lee decided to make jokes on social media about the assassination of Minnesota Democratic State Representative Melissa Hortman and her husband. Ed Shelleby's letter to Mike Lee's Senate staff says, in part, I knew Melissa Hortman. Many people in this office did. She was a longtime friend of Senator Smith's who had seen her hours before she was murdered. So you'll forgive my candor as I speak through enormous grief. It is important for your office to know how much additional pain you've caused on an unspeakably horrific weekend. I am not sure what compelled you or your boss to say any of those things. Why would you use the awesome power of a United States Senate office to compound people's grief? Is this how your team measures success? Using the office of U.S. Senator to post not just one, but a series of jokes about an assassination. Is that a successful day of work on Team Lee? Did you come into the office Monday and feel proud of the work you did over the weekend? Let's recap Saturday so you fully understand what Minnesota was going through. Melissa Hortman and her husband were murdered. Senator Hoffman and his wife were shot numerous times and remain hospitalized. By the grace of God, it appears they will survive. Senators are discovered to be on a hit list of an armed man on the run, Senator Lee's colleagues, and the decision of the office of Senator Mike Lee was not to publicly condemn the violence or to express condolences to her shattered children. It was to intimate that Melissa and Mark somehow deserved this by making jokes. You exploited the murder of a lifetime public servant and her husband to post some sick burns about Democrats. Did you see this as an excellent opportunity to get likes and retweets? Have you absolutely no conscience, no decency? As of tonight, the answer to that question is Senator Mike Lee has no decency. And Senator Mike Lee's staff now live in the disgrace he has visited upon them, and they all have a moral choice in front of them now. Mike Lee purports to be a man of great religiosity, but he is obviously not a man of great morality or great decency, and his staff has to decide tonight what to do about the disgrace he has handed them. We all know what decency demands. Minimal Senate decency demands the resignation of any staff member who does not fully support Mike Lee's despicable tweets. And so
if you remain on Mike Lee's staff in the Senate and you find yourself down in the Dirksen cafeteria or walking the halls of the Russell building or the Dirksen building or the Hart Senate office building or the Capitol, you should know that every other Senate staff member sees you as disgraced, sees you as wearing Mike Lee's disgrace as your own. As long as you decide to continue to serve Mike Lee in the United States Senate, you have your own choice to make. If you agree with Mike Lee's choice to make jokes about assassination of a Democratic officeholder in Minnesota, if you agree with that, then stay with Mike Lee, stick with Mike Lee. Stick with him all the way. But if you do have decency, you know you only have one choice. Our first guest tonight is the first United States Senator in history to be physically prevented from asking a member of the cabinet a question. California Senior Senator Alex Padilla is the first United States Senator in history to be thrown to the ground and handcuffed for asking a cabinet member a question. There are reasons why that has never happened before in American history. The main reason is Donald Trump. But another reason is overzealous federal agents behaving as if they were in a war zone when they were in the air-conditioned comfort and flawless safety and security of a federal building in Los Angeles where Senator Padilla was meeting with other federal officials. There wasn't a single threatening person in that building because no such person could ever get through the metal detectors and the security checks that allow you to get into that federal building in Los Angeles. And so what we saw that day were federal agents, in the name of protecting a cabinet member, obviously trying to impress that cabinet member with Trump-approved violent overreaction. The Marines, pointlessly deployed to Los Angeles with absolutely nothing to do, also overreacted to an Army veteran approaching that same federal building where the Veterans Administration office is, intending to go to that office, as is his right as a veteran. And the Marines decided to handcuff him instead of just asking him to stop, asking him where he's going, and then wait for police officers and security officials to come and ask the same question to see whether he should be allowed to go to the Veterans Administration office where he was going. They were no reason to handcuff that Army veteran who has probably visited that VA office, that federal building before. The absurdity of the handcuffing of that veteran was soon proved when they just let him go. And that is the total contribution of the United States Marines to peacekeeping in Los Angeles so far, where the city has been consistently peaceful for several days now, including during this weekend's massive protest march against Donald Trump, against Donald Trump's attempt to be the king of this country. In the Middle East tonight, real military action continues as air attacks exchanged by Israel and Iran have reportedly killed 24 Israelis and at least 224 Iranians, including at least 6 of Iran's top military leaders. Donald Trump decided to enter the action tonight on social media, posting, "Iran should have signed the deal. I told them to sign. What a shame and waste of human life." Simply stated, Iran cannot have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. Instead of trying to actually do something about what's happening in the Middle East or in this country, Donald Trump spent hours on Saturday watching a military parade that he scheduled to honor himself on his birthday. There was a very low turnout of spectators to Donald Trump's birthday military parade, where much of the parade route was empty of spectators. Remember now, millions of Trump voters live within an hour's drive of that parade, and they refuse to go. There are 1 million Trump voters in the state of Maryland alone, many of whom had less than a half-hour drive to get to the Washington, D.C. parade. And they refuse to go. There's another 2.3 million Trump voters in the neighboring state of Virginia, just across the river, who refuse to go
to the Trump birthday parade. And there are millions more Trump voters in Pennsylvania, Delaware, West Virginia, who were less than 2-hour drive from the 79-year-old's birthday parade, and they didn't go. Nothing Donald Trump ever said about his birthday parade could get them to come. Not to mention the tens of millions of Trump voters living elsewhere in the country who could have flown in and didn't. But while Donald Trump's birthday parade was failing to draw a big crowd, protests against Donald Trump all over the country amounted by some estimates to be the single largest total protest assembly in the history of the United States on one day. The turnout in St. Paul, Minnesota was still strong, even though the state was mourning the horrific murders of Democratic State Representative Melissa Hortman and her husband, which was followed in the middle of the night by the attempted murder of Democratic State Senator John Hoffman and his wife, who were both seriously wounded. Law enforcement officials spent the weekend in a manhunt before arresting 57-year-old Vance Belter, who is now facing federal and state charges of murder and attempted murder. The investigation revealed a list of other potential assassination targets, including both of Minnesota's Democratic senators and Minnesota's Democratic Attorney General Keith Ellison, who will be joining our discussion this hour. The defendant's roommate said this about the now accused murderer's political thinking. I was a Trump supporter. Voted for Trump. You like Trump? I like Trump. Nobody's happy with the government. Everybody's happy with this, not happy what this politician does or that politician does. But you don't go on a shooting spree. It's just, that's why I hate even talking about it, because it's so crazy. Donald Trump, of course, no surprise, has not called Minnesota Governor Tim Walz to offer condolences or help in the investigation. Governor Walz was also on the assassination list. NBC News has obtained a memo sent by a senior official of Immigration and Customs Enforcement stopping immigration enforcement action at work sites in the agricultural sector, including fisheries and meatpacking plants, restaurants, and hotels. Now, this is written proof that Donald Trump's promises of mass deportation of 15 million people were always lies. The only way Donald Trump could come close to deporting that many people would be to deport every person who is working in this country. आने के बाद आपने पेमेंट मेथड चूज करना है, जैसे कि इजी पैसा टू इजी पैसा। इसका ये है कि आपने अपने इजी पैसा से इजी पैसा पे ही पेमेंट करनी है। देन अगर आप इजी पैसा से जैज़ कैश, निया पे, सदा पे, किसी और पे करते हैं, वो है मैनुअल, वो फिर यहाँ पे ऐड नहीं होगी। वो आप हमारे व्हाट्सएप पर आएंगे, वहाँ से आपसे रब्ता होगा, तो फिर वहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, देन आपकी जो अमाउंट है ऐड होगी। ये है इजी पैसा टू इजी पैसा, ये ऑटो वर्क है। आपने इजी पैसा टू इजी पैसा सेंड करना है, ये आपको नंबर यहाँ पे शो होगा। उसके बाद ये अकाउंट का टाइटल जिसमें नेम लिखा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद जो हमारी मिनिमम अमाउंट है 10 PKR 10 रुपीज़, ठीक है। और सेंड करने के बाद जो TID होती है, ट्रांसैक्शन ID होती है, वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। और जितनी अमाउंट आपने सेंड की है ना, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और यहाँ पे ये आप पढ़ यस आई अंडरस्टैंड आफ्टर, इसका ये मतलब है कि जो आपने इस पैनल पे जो डिपॉजिट करवाया है वो आप अपने इजी पैसा या जैज़ कैश में वापस नहीं मांगेंगे, ठीक है। देन वो आपके पैनल में ज़रूर आएगी, जैसे कि आपका ऑर्डर कैंसिल होता है, वो आपके पैनल में अमाउंट ज़रूर शो होगी, बट वो आपके इजी पैसा जैज़ कैश में नहीं आएगी। देन आपने यहाँ पे गैस करके सबमिट का ऑप्शन कर देना, तो आपकी जो पेमेंट है वो इंशाल्लाह विद इन 5 मिनट ऐड हो जाएगी पैनल में। देन उसके बाद दूसरा शो इजी पैसा टू नया पे, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर शो होगा, उसका टाइटल शो होगा, ठीक है। और ये थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन आप रीड कर लीजिएगा। उसी तरह TID लिख के अमाउंट मिनिमम 50 रुपीज़ है, मैक्सिमम आप जितनी में कर सकते हैं। सादा पे मैनुअल हमारा, सादा पे में आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, नेम भी मिल जाएगा। आपने सेंड करके तो सेंड स्क्रीनशॉट, आपने जो नंबर आपको दिया है इस नंबर पे आपने रब्ता करना है, उस पर अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया है पैनल पर वो ईमेल आपने देना है। तो विद इन 10 to 20 मिनट्स आपकी जो पेमेंट है वो पैनल में ऐड हो जाएगी। और बाइनांस भी हमारे पास मौजूद है, बाइनांस की UID है, निक नेम है और ईमेल है।
अगर आपने यूआईडी लेनी है तो यूआईडी भी सेंड कर सकते हैं, निक नेम भी है और ईमेल भी है। ये इसी तरह आपने पेमेंट सेंड करके उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पर आपने सेंड कर देना है और अपना ईमेल देना है, जैसे कि आपके जो अकाउंट में आपके पैनल में पेमेंट ऐड हो जाएगी। देन जो हमारे API यूज़र हैं, हमारे रीसर्च यूज़र हैं, उनके लिए डिस्काउंट भी होगा इंशाल्लाह ताला। आप हमसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे तो आपको ज़रूर डिस्काउंट देंगे इंशाल्लाह। देन यही है हमारा API है, जो हमारे API यूज़र हैं हम उसको डिस्काउंट ज़रूर देंगे। और ये API का URL है, URL के आपने यहाँ से कॉपी करना है और अपने ही वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है वहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है और ऐड API करके आपने API लगानी है, ठीक है। और अगर आपको API की चाहिए, यहाँ पे आपके अकाउंट पेज पे API की आएगी, जैसे कि आप ये आपने ज़रा दिस की इज हिडन फॉर सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे आपने जनरेट करनी है। और जो ये आपकी API की जनरेट हो गई है, ये आपने अपने पैनल में ऐड कर लेनी है और हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करना है और आपको आपने बताना है कि मैं API यूज़र, तो आपको इंशाल्लाह ताला डिस्काउंट मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे पैनल के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको बहुत ही कम प्राइस में टिकटॉक के फॉलोअर्स, व्यूज़, लाइक्स बहुत ही कम रेट में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद यूट्यूब और उसके बाद लाइकी, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन सब के आपको हर एक चीज़ सर्विस आपको बहुत ही कम रेट में मिलेगी। और YouTube में आप अपने जैसे सब्सक्राइबर गेन करके अपना YouTube मोनेटाइज कर सकते हैं। देन अब आप चलते हैं विंडो की स्क्रीन पर। अब इस पैनल पे न्यू यूज़र हैं तो आपने यहाँ पे जाकर साइन अप करना है। साइन अप पे जाके यहाँ पे आपने अपना नेम, ईमेल, अपना व्हाट्सएप नंबर, अपना पासवर्ड वगैरह लिखना है, जैसे कि अब हम आपको लिख के बताते हैं। यहाँ पे आपने अपना ईमेल देना है, यहाँ पे आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लेना है। लिख के देन आपने यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। देन आपने आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस को टिक करना है। देन आपने रजिस्टर कर लेना है। देखिए अब आपका हो गया है अकाउंट लॉगिन। अकाउंट लॉगिन के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा इस पैनल का, ठीक है। और यहाँ पे आपको USD हर करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको हर करेंसी यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब हम करेंगे PKR में। धन्यवाद। आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे PKR में आपका बैलेंस, आपका स्पेंड, टोटल डिपॉजिट। अच्छा, बैलेंस का ये मतलब होता है कि आपके बैलेंस में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। और स्पेंड जैसे कि आपने कोई सर्विस लगाई है, ठीक है, वो इतना यहाँ पे आता है कि आपने इतनी स्पेंड कर लिया है। और डिपॉजिट जैसे कि आपने 500 इस पर डिपॉजिट करवाया और यहाँ पे आपको वो शो हो जाएगा। देन अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने इस पैनल पे ऑर्डर कैसे लगाना है ताकि आप अपने फॉलोअर्स, व्यूज़ को बढ़ा सकें। अच्छा, यहाँ पे आपको कैटेगरी शो होगी, जैसे कि मुख्तलिफ कैटेगरी यहाँ पे है, टेलीग्राम की, फेसबुक की, ये देखिए टिकटॉक, सारी आज सोशल मीडिया की सर्विस यहाँ पे आपको एक ही जगह मिल जाएगी। देन अगर हम देखें तो जो हमारी जो टिकटॉक लाइव चीप्स अपडेट, तो यहाँ पे आपने आ जाना है, ऐसे आपने सर्विस स्टार्ट कर लेनी है। और ये जो मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब ये है कि मिनिमम जो आपने ऑर्डर लगाना है वो 10 लाइक्स का, ठीक है। इससे कम का लगाएंगे तो आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। और जो मैक्सिमम है वो है मैक्सिमम 1000। देन आपने अपनी टिकटॉक की वीडियो का लिंक कॉपी करना है और कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, जैसे कि अब हमें चाहिए 100 लाइक्स। देन आपने यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आपको टोटल चार्ज होगा, आपने 100 लेने हैं, 10 लेने हैं और 1000 लेने हैं। और जैसे कि अब यहाँ पे 1000 आ गया तो यहाँ पे 23 रुपीज़ इसकी शो हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने यस आई हैव कन्फर्म ऑर्डर, इसको लाजमी टिक करना है। आपने टिक करके आपने सबमिट में लगा देना है। तो इसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो स्टार्ट हो जाएगा।